Hello and welcome to another live Grey Beyond Narrative session. I'm your host Maham, and today we're going to talk about something very important and sensitive that has been going on for a few months now. Since the 7th October attack of Hamas on Israel, the ongoing war has taken a new turn. South Africa has put up a case against Israel before the International Court of Justice, or ICJ. This is a topic that has been making headlines all over the world, and we felt that it was critical to bring it to our platform. Adila Hasim, who is representing South Africa, told the court that every day there is a mounting irreparable loss of life, property, dignity, and humanity for the Palestinian people. Nothing will stop the suffering except an order from this court. Since Israel launched its military campaign against Hamas in response, more than 23,000 people, mainly women and children, have been killed in Gaza, according to the Hamas run health ministry. And evidence submitted by South Africa claims acts and omission by Israel are genocidal in character because they are intended to bring about the destruction of a substantial part of the Palestinian national, racial, and ethnic group. The governing African National Congress also has a long history of solidarity with the Palestinian cause. It sees parallel with its struggle against apartheid, policy of racial segregation and discrimination enforced by the white minority government in South Africa against the country's black majority until the first democratic election in 1994. The country also condemned the 7th October attack and called for the release of the hostages, the Israeli hostages. Mr. Tal Becker, who is representing Israel in ICJ, accused South Africa of making an attempt to weaponize the term genocide against Israel. The German government issued a statement on Friday saying it expressly rejects the accusation of genocide against Israel, saying the accusation had no basis whatsoever. In view of Germany's history and the crime against humanity of the Holocaust, the federal government sees itself as particularly committed to the Convention Against Genocide. We firmly oppose political instrumentalization. Government spokesman Stefan Habestredt said Germany would speak at the main hearing at the ICJ. A spokesperson for UK Prime Minister Rishi Sunak said Mr. Sunak believed South Africa's case was completely unjustified and wrong. The UK government stands by Israel's clear right to defend itself within the framework of international law. Senator John Fetterman criticized South Africa for bringing a genocide case against Israel in the United Nations International Court of Justice, saying the African nation should focus on quelling unrest on its own continent. There are white farmers being killed in South Africa, which South Africa have said that it's more like because of the high rate of crime rather than racial thing going on. Israel, which was founded in the aftermath of the Holocaust, has denied the allegations. As a sign of how seriously they regard the case, Israeli leaders have taken the rare step of engaging with the court to defend their international reputation. Israel often boycotts international tribunals or UN investigations, saying they are unfair and unbiased. This is the introduction of the topic, which will further be discussed in the session. We'll look at the allegations of genocide, statements made by South African officials, South Africa's request for provisional measures, and how the document argues that the alleged genocidal acts are taking place during an armed conflict. We'll also talk about the implication of a prior determination of genocide by a court or fact-finding tribunal. Remember, our goal here is not to take sides, but to better understand the situation and to encourage respectful and informed debate. As a result, we encourage you to keep an open mind, listen carefully, and respond to your question. We're all here to learn and grow together. So without further ado, let's get started. I think Shaji will take care from here. Shaji, you want to take over? Yeah, I just have a simple opinion on this, which is that none of this matters.
like 8 weeks ago, when this kind of a situation was developing, a lot of people were saying a lot of things, but my stance has been very, very simple in regards to this, which is that at some stage there will be a peace deal, a negotiation, and that negotiation is going to be how much of Gaza is Israel going to evacuate and at what level, and who is going to be running that entire situation. The courts of justice in the past, just like now, like Mr. Becher in Germany, all of a sudden, and there are people in South Africa who have made these statements. At least I've seen in my lifetime, and if you look at the history of entire human rights courts, what you'll find is even if they pass a verdict, nothing actually comes out of it. Well, that's just what my stance is. People might have a different opinion in regards to that. So for me, this is just another news to show and deviate from the actual situation where all of a sudden the time has gone from speaking about the casualties which are occurring in Palestine into another controversy where people are now kind of looking at what the courts will say. I think it's irrelevant what the courts will say. Nobody's ever basically taken into account and implemented that. I've forgotten the gentleman's name, but he was a Serbian leader. There was when Yugoslavia broke, the Serbian person, he basically killed a lot of people. He was the orchestrator of directly and indirectly killing of multiples of thousands of people, but nothing ever came out of it. Even though he was held accountable, he was never prosecuted. So I think this is just a deviation. There is absolutely nothing in it, and it doesn't have any effect on the lives which can be saved in terms of Palestine. So that's about it. Thank you. So Kandai, are you going to take the mic or? Yeah, I think Shaji, what Shaji said is a bit better, but that's the actual truth. Uh, there are UN conventions which tells us about how things should be in that region, in Palestine and Israel, and no one like even bothers reading those conventions or citing those or quoting those because they are never followed. Um, International Court of Justice (ICJ) is something whatever they talk about never translates into actions or policies or any drastic changes. It's not something which uh, yeah, like not much would come out of it. But one thing which I see uh, will come out of it is that like it might say in news this topic international publishers would put in headlines for some time and then just forget about it probably in a year or two when the decision comes or something comes out of it, the conflict would be over probably. And yeah, and the main context of the application that the South African delegation put forward, the main context is that they are invoking the genocidal act of 1940, I guess. Uh, any Tom, Dick, or Harry would know that a genocide is being carried out in Palestine right now. So, and when people denying that, it's an uphill battle to convince a lot of people or a lot of powerful countries
uh, that it's actually a genocide, apartheid. What they are actually doing in Palestine is wrong. Uh, but it's clear that what's going on in Palestine, the death toll is above 20,000 since October, when the attack started on Israel. Things are not improving in any way or form, and the aggression is not uh, getting any slower. Or there have been voices around, like, to support the ceasefire. There should be a ceasefire, but the notion of self-defense comes in over and over again. And what I guess it was in the opening statement what Medusa said. People like Rishi Sunak, heads of state, or US senators coming in and giving statements like, uh, of the notion about the self-defense. I think that's something. Uh, if like some support is garnered during all this procedure, and then some facts are put forward, I don't know, but overall, I think I agree with Shah. Nothing would come out of it. Yes, Sid. I think that in reality, what South Africa has done is not put Israel at trial. What South Africa has done is put United Nations at trial. We already know that even if the judgment is given in the favor of the Palestinians, nothing practically would happen because everybody already knows that a genocide is being carried on. Everybody knows that what they're doing is wrong. Everybody knows that prior to October, Israelis were acting like an apartheid state. Everybody understands that it did not start at October the 7th. They, I mean, the people who quote unquote were attacked by Hamas are right now accusing Israeli soldiers that the Israeli soldiers were shooting at us. Even the victims or quote unquote victims of Hamas are saying that are not pointing out at Hamas. The people who were captured by Hamas, the prisoners that were exchanged, they are saying that they were treated well. The videos are out. So I think that what South Africa has done, being, I mean, they're not even a Muslim nation. It was our job. It was the job of the Muslim nations around the world to do what South Africa has done. And they have done it rightly so because they are standing firm on their own philosophy. They are standing firm on their own principles. What is the one of the core principles of South Africa? It is to be against racial discrimination. That's what makes South Africa South Africa, right? They No. were an apartheid state and they rose So against can it. I just add something? I would like to know why do you think South Africa has done that, and I have an opinion on that as well. I don't think that they've done this for the Palestinians at all. It has a Could you lot to elaborate do with on it? internal politics, where Malema is basically now garnering support. I think we discussed about that a few months back. Yes, that is And true. one of the things which is the current government is extremely scared of, or is skeptic of, is Malema is going to sweep the next South African elections. And the current government has been thought of to be in support of the Afrikaans, who happen to be the white people, compared to the Malemas, compared to Malema and his party's stance. And this has basically given out a clean status in terms of South Africa to the world, that South Africa has really moved from apartheid. So this is more an image clearing
situation for South Africa themselves. Anyone who this is going to benefit is going to be the South Africans, because when history is going to be written, it is going to be stated that in 2023, South Africa, with the current government, was able to make that stand against another apartheid country. With the government which is in governance right now, this will also show that they are actually not puppet states. They're not a puppet government of the Afrikaans. And again, that is going to create a lot of hegemony and gain in votership, or at least that is the intention behind it for the majority black voter within South Africa. That the government in power right now is definitely not a promoter of apartheid. And it's not only Malema who happens to be in the opposition who is going to come out and garner that kind of a freedom. Both of the parties are the same. So voting for Malema on the grounds of that, on top of that, the current government has referred to Malema as a racist person. They're saying he's going to be promoting fascism against the white Africans. So this is a clear stance that we are going to basically not only speak out if you were to vote for us, we're not only going to speak out against any form of apartheid or discrimination against anyone internationally, and neither are we going to make do that in our local politics. We're going to be fair amongst the white Africans as well as the mainstream black and a minority of Asians. And this is what this government has done. And let's see how successful it is. It's going to be interesting, this very move, when the election time comes, which is only a few months away. They're going to use this. If we were apartheid, like Malema, if we were promoting fascism, like Malema, who a lot of people want to vote for, then we would not be looking out for the Palestinians, going to international courts of justice. And what we stand for, we believe that white Africans are just as much part of South Africa as the black and the Asians. And this is why they've gone out and done this. And So this might basically, you're benefit. telling me that the South Africans are doing this because they think that it is right to do internationally and also because they think it's the right step locally. No, it's the current government who's doing this to They're make doing sure right that about it. the opposition doesn't come into power, and they themselves do not look like white appeasers. Because if they When would the have opposition campaigned for is the white perceived to be Africans racist, to be included, they would have been, because white Africans were the ones who orchestrated the apartheid pre Mandela becoming the president. Do you okay, understand? so So this telling is me to that I realign that entire situation and come out as that kind of party which is taking everyone together, the East Asians, the South Asians, the blacks, the white Africans, while Malema's party is concentrating more on the black people. so the South African government is anti-racism, anti-apartheid internationally and locally. So you're telling No, me both. I believe it's quite the opposite. I think they're African pleasers, and they have been ever since they've been in power, and they want to stay in that, but they want to give an image of that so Melimar doesn't come into power, who happens to be a pro-Russian as well as a pro-China individual who is supported by the majority black people within South Africa.
As a And result, again, if this government was able to convince the majority black voter in terms of showing that they're not white appeasers and they're actually against apartheid and white Africans should be included in everything, and the United States should have the same influence as well as the United Kingdom and Europe in terms of South African politics, they will re-win. It might just be enough to win the elections. so again, you're just telling me that they have something to gain, something to prove as a people, and they're doing it. I don't know how, if that is what you take from what I've said, I think it And will become yes, repetitive. there are politics But involved. I It don't is believe that at international all. I politics. think it's a gimmick. Because if they would have done something, if this government should have done something, they should have enabled that black people, after they've been in power for so long, black people are out of shanty towns. The cricket team, football team, and other sports places have equal representatives of black people within them. They should have made sure that the top universities in their own country show the depiction of majority of their population with black people within it, which happen to be 95% of the populace of South Africa. But when you look at the top opportunities, top businesses, top universities, you look at all those places, the cricket teams, the media support, the government support, that comes to white people, the white Afrikaans still. And that is what is garnering support for Malema. And this government keeps blaming it on merit that black people are not basically achieving the same amount, neither do they have the same amount of talent for whatever reason. They're living in destitute or do not have enough resources, and they're just providing them quota. This is a gimmick. This is what this is. Because if Malema comes into power, South Africa is going to be truly, truly going on to the opposite direction. And it will actually bring the revolution which Mandela actually compromised upon after his release from prison. So it And racist what his state, original but vision was. so it would become a racist state, but the discrimination would be against white people because uh, aren't these I do not think isn't I, the I do same not kind think it will of become a race. I think it will become truly liberated. I know he's very harsh, Malema, when he speaks, but if over 90% of your population is black and the representation in terms of money, in terms of education, in terms of sports teams, in terms of everything else, is showing white and Asian people who happen to be not more than 3 or 4%, not even 2 or 3% of that entire country, then something is severely wrong. yes, it's called generational wealth. It got It's liberated. are, South Africa got Saji, liberated in are 94, you right? saying that South Africa is about to go through a French Revolution? You know how the upper class were guillotined by the working class, something like that. Because that is as well. I think the indications were there, even in the previous elections that happened in South Africa in 2021. I guess the current government is with the African National Congress, and they're basically uh, uh, like vote share basically fell below 50% for the first time since 1994, since the end of apartheid. Although Shaji is saying that Mandela did like certain We have to things, take into consideration, but like Furkan, right? that's one of the indications that they need to do something to get like uh, 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 like
to establish the next government. So I guess this is what Shaji is saying. Hey, Shaji? So sorry, I got disconnected. So Yeah. So since I would not go 1994, as far in as saying 20, the French yeah, yeah. Revolution, but obviously, what's happening, in my opinion, and that is why South Africa is very interesting in that way, is that for more than 30 years, I think it was 30 years back officially, when South Africa on paper became non-apartheid and started to provide equal representation. But that representation has not translated into realism. And that is exactly what Malema has been pointing out. Now, when the current government is being branded as racist and appeasers of a certain kind of people from a certain kind of background, in this case, white people, the white Afrikaans and the South Asians to an extent, the hierarchy is still there. If you look at majority of the diamond mines, for example, they're still owned by the white people. That's not generational wealth. That is white people. It would be an equivalent of the officers of the British Raj remaining in power and owning the resources of India, Pakistan, and Bangladesh till 2023. That's what's happened in South Africa, and that is what Most of the Malema is pointing out exactly. most of the diamond mines in Africa is, I think, still owned by people from the UK, right? because If they're they're owned by owned by companies, not Afrikaans individuals. who say they're local, but they're not really local, because even when I've come across, uh, I don't want to name those people, but I've had colleagues from South Africa Shaji, who sorry, I'm cutting you. Can you explain the term Afrikaan, because I think it's Afrikaans sort of are getting. basically white people Yes. who claim to Thank you. be South Africans. So African people I've come across in my life, and majority of them are fine with Asians and Arabs, but they don't like black people. They still have that in their minds. They still pass comments which are extremely racist. And I've seen those kind of people who would not basically hire or speak to a black person. I'm not saying all of them, but a lot of them, because and you can't really blame them if the youngsters are like that. And I'm talking about people who must be in the age brackets ranging from 20 to round about 45, 50. That Do is there not this is all the generation which is post Nelson Mandela South Africa. do there not exist in South Africa African farmers that are not No diamond farm mine owners. owners? There Africans are are farm farmers. owners, and Pardon? black There African is South Africans there work is for them. no 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 there is a controversy where white farmers are being killed by black people, where They're people are farm claiming that owners, it's racism. and the workers that you would find you cannot refer to them as farmers. Those But they're people, the saying white they actually called them white farmers. So they're basically feudals, bigger feudals. Some of those white Africans would own tens and thousands of acres. I knew a few individuals whose parents owned land which persisted of diamond mines. So the question is, usually all these things are basically government property. If, for example, there's oil somewhere or there is a diamond mine, those things are supposed to be the asset of the government, not some private landowner who is claiming that they're a farmer and they happen to have a diamond mine within their farm. Do you understand? That's supposed to be a national asset. And that's exactly what Malema has been pointing out. That's exactly what Minnie Mandela stated to her husband, that after coming out of prison, he compromised. I know a lot of people will come and say that he brought a revolution,
but he kind of compromised. Nobody can deny that. If you look at the football team or the cricket team, football team still you can see a lot of black people because that's a poor man's sport in that way, and it is beneath the white Africans to basically indulge in that to the same extent because they're used to being from a high profile background. But if you look at games like cricket or you look at games like rugby, doesn't it raise your eyebrow that even after 30 or 40 years, there's a minority of white community known as Africans who dominate those sports, who dominate businesses, who dominate land ownership, who dominate diamond mines. So I don't think Malema is racist. I think Malema is speaking When apartheid what the world ended, has forgotten about, and it is a everyday occurrence. when apartheid ended in South Africa, what happened was that the local or the political Don't you think representation. we're moving away from the topic? Yes, we are actually we're going away from the topic because basically what has been stated is that because South Africa has internal interests, therefore their effort on international level should be nullified, and I would No, be no, against that. I don't I think think, it's an effort. yeah. I think it's a very well planned orchestration from the white Africans and the current government to basically have, portray a global image to help them remain in power in South Africa. And that is where and why they did that. Because it's not going Had a to, Muslim country done that, because it's it's not not going going to. to, the reason why they've done it, it will personally benefit them to a certain extent, but it won't have any effect on Palestinians. And Okay, even but if you look at it, who it's going to benefit each time. Malema is going to make a statement. The current government is going to make statements. If we were so racist or if we were white pleasers, then why would we go and do this? all right, and on the international level, they would not have been able to do that had a Muslim country done that before them. And It what was would it? not their job, it was ours. Okay, that's a different Pakistan did debate. not do it. But Muslim countries do not have a reason to go and do that, and they know it's not going to have an They have effect. the power to do it. And majority of Muslim countries have interior motives in those entire situation, and they're not speaking out. Palestinians are basically stuck. I don't know. I don't think there's any voice of Muslim countries. Muslim countries don't give two hoots What South about Africa anything. completely ignoring what their internal matters are or how the current South African government is going to benefit from it or not, keeping that aside. What they have done, however, is put the UN at trial, not Israel. Because you see, after I all of think this you has give been, these institutes too much credit, but that's your choice uh, about it. it's a thing that is naturalistic because after um, all of Actually, the this, UN passed a very similar statement. So UN, when all the white protesters were there, UN basically said what Israel is doing is basically a genocide. What Israel is doing is that. What happened as a result? All the protesters in Europe and USA went back home. They thought they've achieved enough. So UN served its purpose. okay, And so basically, so will international courts of justice. It will as well. Will it have any benefit for the Palestinians? No. Whenever Greta is going to be spoken about, she's going to say, I achieved this, I made the UN make this statement. So yes, Greta benefits. Yes, the protesters on the road will have this a sense of achievement that they've done as much as they can, and now they can go back home and go to bed. it is still Did more it than help what the the Muslims have Palestinians? done. Nope, nada.
Yes, I completely agree with you on that, but that is still more than what the Muslim countries has done. That is something that we have to understand. Two Muslim countries have done more: Yemen and to some extent Iran. Why are you so bothered about Muslim countries? Which Muslim countries? Because at the end of the day, the bond that the Palestinians have, that is the strongest with another group of people, That has is nothing to do with any government. I mean, no government is going to do nothing which is going to go against them. No which government. is what I'm These talking governments about. who basically went out and did something. South Africa, that's exactly my point, did what they did because that government is going to benefit out of it. Do you get Okay, my point? They're going to and benefit out of it. They have something to benefit from it. The Muslim countries, which you refer to as Muslim countries, have nothing to benefit about it. Do you remember in the Pakistani parliament, there was this guy, I've forgotten his name now, who read that entire letter out. It is against our interests. We won't do this. We can't do this. Why the hell was he reading that letter out? Was it what? It was a statement. He was just clearing himself, showing that we feel, but we can't do anything because we have economic issues and all that. That's all what all Muslim countries have done, apart from Iran, which for obvious reasons again has embargoes. The West has embargoes against China and Russia. Again, they have their own interests why they are showing certain amount of movement. So is Iran. So is Turkey to an extent. So are the Houthis who are themselves. But at the end of the day, nobody's going out all out for the Palestinians minus their own interest. This was a different situation. If Iran would have not had to suffer from embargoes, even Iran would not help. I remember not too far ago when Afghanistan was about to be attacked. At that time, Iranians first offered airspace to United States. United States after that went and called them axis of evil. That's when they retracted. Otherwise, they would have joined Pakistan in providing United States airspace. and that whole notion is what I am speaking against. I am agreeing I with don't know you what on that. I think you're under the primary delusion which 1.5 billion around the world happen to be general populace who happen to have governments who basically just look out for their personal interests, believe that there is some kind of Muslim Ummah, but there is no such thing as some country standing for Muslims. Form of It doesn't government matter. If that strategies was the that, case, not in our lifetime, we would have seen how many countries have we seen and being that is destroyed right exactly in what front I'm of us. speaking against. Hold on, let me finish now. We've seen Afghanistan, we've seen Somalia, we've seen Rwanda, we've seen what's happened in Ethiopia, we've seen Syria, we've seen Libya. These were some of these countries were very developed. We've seen Egypt, we've seen Iran go down the road, we've seen Afghanistan. So, okay, Afghanistan was not so developed, but Iran was certainly developed. Egypt was a very developed country. So was Libya, and so was Syria. Today, they are disaster zones. It's very similar to what the situation in Afghanistan is. Palestine is no different. So, if there was such a thing as a Muslim ummah or Muslim nationhood, they would have not basically seen this happen on their TV screens, change channels, normal populace talk about something, they would have, if they wanted such a union, they would have stood up for one another. Do they lack resources? Nope. Do they lack education? Nope. Do they lack technology? Nope. But they do lack unity and they lack cohesion and they're not on the same page and they're not part and parcel of the same network. And that is why they basically get together with other countries and they get destroyed and they watch their so called Muslim brother dying.
Palestinians are just a very latest example and ongoing. Libya, Lebanon, 10 years ago, was now a developed tourist nation. What happened to Lebanon? Israel, same Yeah, Israel bombed. Did the Iranians stand up for them? No. Did the Saudis stand for them? No. Why would and they that is stand up for what I'm Palestinians? So saying. I don't know what you're expecting, but our last 30, 40 years showed that nobody gives a flying hoot when it comes to somebody being Muslim and being killed. So that's That my is opinion. exactly what You I'm can have that criticizing. opinion, but it's fine. That is exactly what I am criticizing, Shadi. That these governments are doing jack shit. These governments of the Muslim countries are not representatives or proper representatives of their people, that they are not signifying. I mean, the public is in uproar. Do you think that any Muslim government that does do more than what they're doing right now, something substantial in favor of Palestine, do you think that the public is going to be like, oh no, we don't like it? That government is going to be popular. That government is going to have a populist uh, favor. Yet they're not doing it. Again, I do not agree with that because whichever government does that is going to fall flat. Like the Imran Khan government in Pakistan, there was a regime change, there was a regime change elsewhere, economic hardships, and then the same popular public opinion goes to the other extent that why are we not making money? Why has the situation tightened? So no country is going to do that either. And the population, when it comes to your own stomach compared to someone else's, 9 out of 10 people in any country, large number of their population, are going to support their own gains. Did we see that in Yemen? Or did we see in Yemen, in Sana'a, You see thousands that of people everywhere. shouting, There are tons let of the examples. war happen, we'll see what happens? Same will Said, I happen think here. I think Yemen Israel's doesn't have. fate and Palestine's fate is decided for now. Yeah, Uh, and that fate is that Israel is going to be requesting, Israel is going to be requested by a lot of people uh, to basically announce its policy for what they want to do in Gaza in the end, because that is now a territory controlled by them. and I think So we should Yemen has completely stop Yemen discussing has about that yeah, and because said I we think don't have the power. Yemen has nothing to lose. Uh, Anyone taking a drastic step like South Africa is taking a drastic step, but I would also like to have Shaji's opinion on that. Like if they are taking a drastic step on this issue, although due to internal politics and the dynamics that you just explained between the Afrikaans and the natives, but what impact would it have on South Africa in terms of international relations with the powerfuls? Shaji. Nothing, because even the Western countries do realize that if Malema comes into power, then South Africa is lost. And this is a perfect thing without having any significant impact, trying to save that post in Africa, which happens to be very important. The second most important country has already been lost by Anglosphere, which is known as Zimbabwe, which used to be the bread and butter and the complete control, one of the richest countries. But when Mugabe came into power, he made sure that it turns, and that affected the Western countries a lot. Now, all of a sudden, you've got a situation where United States and allies are basically asking Ethiopia to go and attack
Atria, or however you basically pronounce that country. I keep forgetting it. Maybe I'm doing it incorrectly right now as well. But the point over here is very, very simple. South Africa, if that goes down, Malema comes into power, that's it. The fate of South Africa is with the black voter right. If they vote in Malema, the current government goes, that means China will have complete hegemony in terms of influence, and so will Russia, because that's what Malema has been talking about. And the same Western countries, God forbid, if, well, I would like to see, maybe it should happen that way. So, not God forbid. If, for example, Malema comes into power, they will sanction South Africa. They will put sanctions on South Africa like never before, even worse than what they did at the time or the height of apartheid. So, okay, coming back to the, I think to the region, because we did some in detail discussion on internal issues which are basically leading to uh, what South Africa is doing right now in the International Court of Justice. Uh, like I know Shaji is a bit skeptical and a bit. I would phrase it being realist, not pessimist, but uh, yeah, like nothing much would come out of this case in conclusion. But uh, do you think there are any uh, like benefit or gains coming out of this whole procedure going forward? Anyone like Sid, Medusa, Shaji, anything that would benefit in any way or form the Palestinians It or will, in my yeah. view, set a precedence for the future because it's only the law of nature that sides change, situations change. The outcome of this case is going to set the precedent for the rest of the members of the United Nations. It's going to make a statement that whether or not the whole entirety of the world has come to a situation where righteousness or law is abided by, or is it just might is right? Because if it is just might is right, then when the sides will change, the other side is not going to be considering any sort of laws or international conventions. It is going to set the precedence. Because when the sides will change, and they will, they always do, and saying, oh no, you guys are uh, doing all of these horrible things, people will be able to say whether or not they'll be able to say, well, we don't care, or they're going to say, okay, we have laws to follow because it's right, because it Uh, was followed. Sid, you do know that the same court actually told Russia to stop attacking Ukraine, and Russia just ignored it. Yeah. So So it one does not precedent matter. will It set that makes no might be right. difference. So basically, what it is doing is it's destroying the credibility of United Nations itself, the whole conceptualization of United Nations itself. No, the reason, I'm sorry, I'm going to say this. The reason United Nation was created was to defend the right of these or all these countries, right? It was not created to defend like, people who are being genocided or killed. If you think that the United Nations was created to defend the Palestinians or the Yemenis or the Afghans, you are mistaken. It was created to defend the Europeans, the Americans, the British,
and the Jews. Sorry, the Israeli, not the Jews. Sorry, it was made for So, them. so Support basically, no, no. Then even if basically, even if even even Israel, if the decision came something where the United Nations decide against Israel, US will just veto it, and that's the end of story. Although so looking that at the although looking at the past decisions and what outcomes have come basically forth in the future based on the International Court of Justice rulings, but then again, let's be a bit optimist, I would say, I and mean, he's not wrong. You have to understand and see if America. we because one thing which South Africa is demanding is a sort of a provisional ruling or measures to be taken It wants that Israel to basically cease fire in yes Palestine. even before like Wants Israel the to cease outcome fire. of the proceeding comes out, they are requesting for a like a provisional intervention that the ICJ rules that there should be a ceasefire. So can if they rule in favor of that ICJ, uh, what chances are that Israel would lend an ear to what the ICJ I would says? consider those chances high because they have already leveled the whole goddamn place. So if they do, make it go through ICJ, Israel most probably will be like, just to save face, okay, we'll do it. We have already leveled the place and Now peace. that's And where if the Israel, Muslim countries will come in. So because Israel has flattened the entire thing, infrastructure now needs to be built. That infrastructure is going to be created by Saudi Arabia. That infrastructure is going to be created by UAE. And that is going to tie Palestine and Gaza Strip into what is known as Abrahamic Accord, according to which there is going to be a direct train line, a pipeline all the way through Israel, through Gaza Strip, known as the Hejaz Pipeline and Hejaz Railways, which is the last element of which happens to be Gaza, where it has not been constructed. Mega projects do not lie. They are a physical So, existence. so is it going to be a good thing for Palestinians? Are they going to No, I get don't any think benefits so. of it? They're diminished. The best ideal will be that Palestinians are told to go and move into Egypt or Jordan. That would be the best scenario for Israel as far as they look at it. But Israel, if Palestinians do not move, majority of them have been demoralized anyways. Whatever they had built in the last 20, 30 years is gone. There is no infrastructure, there is no fresh water, there is no place for education, there is no power stations. Everything has been destroyed. All that is going to be uh, going to benefit Israel. Israel is going to say we are letting human development occur. The Muslim countries will come in and certain countries will build those things and basically say, look, we're helping the Muslims, but they're just helping their own gains. Will that mean that Palestinians will get a job in any of those things? No. Does that mean their lifestyle will become better? No. so at the end of the day, again, the Muslim countries I and the also want to add government. something here. I also want to Okay. add something here. Take second, sir, if you don't mind. So the Houthis have been attacking different ships of the US and UK, in return of which the UK and US have fired bombs on some of the places in Yemen at night. And Pakistani warship have been deployed to the Red Sea to increase security. It's all over news. I mean, the Pakistani army is doing its job. What can we say? They are serving the masters well.
We can't stand with the I don't righteousness. think you can refer to it as masters. The thing is, Pakistan also went and joined certain alliances. Pakistan is very clear, historically speaking, where it stands. Pakistan is not a तो country which is. देखो देखो वो कोई मसला नहीं है, तो फिर टोपी ड्रामे ना करे, फिर ये पासपोर्ट से ये हटा दे कि दिस पासपोर्ट यू कैंट गो टू इजराइल, फिर हटा देंगे, फिर ये टोपी ड्रामे किस चीज के लिए कर रहे हैं? सबसे पहले बस पाकिस्तान के हमें नाम के अंदर से इस्लामिक रिपब्लिक हटाए ना। यार, कैसे I पता? do not. I don't think कि किसी का मुसलमान होना या मुसलमान ना होना या किसी कंट्री के लोगों का मुसलमान होना या उनकी गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स का मुसलमान होना किसी की साइड लेने से डिटरमिन होता है। वरना तो फिर इस तरह तो मैं कह सकता हूँ कि जितने लोग मुझे ऊपर से नीचे तक चोर नज़र आते हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको भी आप बोल दो कि वो अपने आप को आगे से मोहम्मद और हुसैन और अली और उमर और अबू बकर हटाएं। बनता तो वैसे है, नहीं, लेकिन लेकिन नाम जो पासपोर्ट में जो लिखा हुआ है कि विद दिस पासपोर्ट यू कैन नॉट गो टू इजराइल, तो फिर वो भी हटा, वो तो हटा देना, मतलब दैट इज नॉनसेंसिकल एट दिस पॉइंट, लाइक दैट्स स्टूपिड. No, दैट actually, Pakistan, actually, we have to look at it in from the point of view how it actually is. It is not like some country is going to go out and say कि हम ऐसे कर देंगे और वैसे कर देंगे और हम इस तरीके से अब ये जो पैक्ट हमने साइन किया हुआ है हम इसके अगेंस्ट चले जाएंगे just because we have a certain policy that is going to have ramifications. Pakistan is not in a position to do that if you're asking realistically. When, if for example, पाकिस्तान tomorrow चीजों that was to happen, if that पाकिस्तान ने थोड़ा सा पाकिस्तान से आवाजें जब आ रही थी, इसी वीक के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स added two countries to a list of countries of possible threat. One is China, the other is Pakistan. That is like a pointer towards Pakistan that we are watching you very carefully and there can be ramifications. आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप जो दिन रात कंप्लेन करते हैं वेरियस चीज़ों की कि हमारे पास बिजली नहीं आ रही, हमारे पास ये नहीं आ रहा, हमारे पास वो नहीं आ रहा, हमारे पास ये नहीं है, अगर एक सैंक्शन लगेगी तो उसका रिजल्टेंट जो है लग पता जाएगा लोगों को. सर इस Pakistan is a वक्त country दुनिया which में will शाह be जी, affected by sanctions. आपने गुलामी और जरूर शाह उनकी जी, करनी है, फिर फिर मारते हैं आपको। फिर यही गुलामी नहीं बात है, करनी, लाइक ऐसे उनकी इंटरनल ताकत इसलिए नहीं पॉलिटिक्स मारते। इंटरनल पॉलिटिक्स चाहे साउथ अफ्रीका की हो चाहे पाकिस्तान की हो, वी हैव टू लाइक ऑब्लाइज टू सर्टेन इंटरनेशनल रिलेशंस Exactly. जिसकी नहीं, वजह लेट्स से जस्ट, आपकी नहीं नहीं इकोनॉमी We फुरकान have भाई, to बट बन रही oblige होती है. because बट no, no, wait a वी second. शुड फुरकान. Hey, Medusa, give me a second. We have to oblige because we are not sovereign people. Because we are being controlled by puppets who are being controlled. No, no, it's Who not is like that sovereign? Who No, is exactly. sovereign? because they Sid, don't It's have to follow a damn देखो, convention. Sid, I Sid, think I personally believe Pakistan right now. I know a lot of people hate the establishment, but I think Pakistani establishment right now is under huge amounts of pressure themselves because of a simple reason that the world is being multipolar and Pakistan wants to be, or at least the Pakistani establishment wants to be in a position where there is enough relations and interest of both United States and China in Pakistan. So Pakistan turns out to be a certain kind of place where it is they do not harm Pakistan because they have something to gain from it. And I think Pakistani establishment or the Pakistani authorities as the first criterion is safety of Pakistani people. Then comes something else. अगर आपको फॉर एग्जांपल इस वक्त एकदम से आपके सड़कों के ऊपर आपके प्रोविंसेस के अंदर फट पटाखे शुरू हो जाएं तो आप सबसे पहले बोलना शुरू कर देंगे. पाकिस्तानी लोग जो हैं they're not used to hardships, let's be honest. ठीक है, डेप्रिवेशन की थोड़ी सी कोई चीज़ होती है तो उसके अंदर उस बंदे को ही कहना शुरू कर देते हैं महंगाई हो गई, महंगाई हो गई. दिस इज अगर सॉवरन होना चाहते हो तो गुर्बत को कबूलो.
लेकिन that is not something which Pakistani people are बट willing to शाह do. जी जो आपने बात की है ना, आई वुड but पुट इट वेरी वेरी क्रूडली एंड वेरी ओपनली, ठीक है, मल्टीपोलर है, ये है, बड़ा प्रेशर है एस्टैब्लिशमेंट पे, एस्टैब्लिशमेंट I won't use some harsh words, but 3-4 शुगर डैडी फिर रहे हैं और उसे समझ नहीं आ रहा कौन सा शुगर डैडी अडॉप्ट करे, ठीक है, they need money, और कान भाई it's stop simple, talking बट like नहीं है, उसे उसे देखो उसे I'll पैसे be चाहिए, very जो for the पैसा फेंक first time तमाशा I'm फेंक going to देख, be वो जो पैसा for the फेंकेगा वो first time तमाशा देखेगा एस्टैब्लिशमेंट आपकी. पता है क्या for the first time I'm going to say that but I am tired of arguments which come internally specifically from a word which I was very against but now I'm not shy to say but there are certain Yuthias and there is a Yuthia narrative. Stop talking like a Yuthia and look at what is happening globally, what is happening on your doorsteps. ठीक है जो जो इंडिया ने नया मैप रिलीज किया ना यूएन के अंदर उसके अंदर सिंध जो है ना वो इंडिया का पार्ट शाह जी, but Well, I, this is नहीं नहीं even एक सेकंड एक सेकंड एक even सेकंड एक सेकंड before फुरकान the भाई term फुरकान भाई एक Yuthia सेकंड was coined. One point, फुरकान Bobby, भाई even before the term Yuthia was coined, establishment और international relations issues चल रहे थे. कोल्ड वॉर से बड़ा इशू आया था नहीं आया था, ठीक है, बट जो एस्टैब्लिशमेंट इस मुल्क के साथ कर चुकी है दैट इज डॉक्यूमेंटेड, देयर आर नो इंडिया टू देखें वेज अबाउट इट, ठीक है, पता है क्या यार एक इवन इस सेकंड मुल्क बिफोर द के मैं बीच में साथ टर्म कुछ इस यूथिया वाज बात मुल्क कर के पॉइंट, लूं साथ जो ये आर्गुमेंट्स पाकिस्तानी उधर कर थे. चुके हैं ना यार इस एक मुल्क सेकंड के एक साथ जो सेकंड पाकिस्तान एक सेकंड वन सेकंड प्लीज इस मुल्क के साथ ना मुझे इंटरनल पाकिस्तान पॉलिटिक्स पे बात नहीं करनी लेकिन बात यह है कि लेट्स कीप इट टू द पॉइंट आप अगर ग्लोबल प्रिज्म से देखेंगे तो पाकिस्तान इज इन शिट राइट नाउ ठीक है और अगर आपको ये चीज़ नहीं नज़र आ रही तो द थिंग इज आई कांट हेल्प दैट लेकिन पाकिस्तान के अंदर खाली इस्टेब्लिशमेंट नहीं पाकिस्तान के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी कर चुकी है जो पॉलिटिशियंस कर चुके हैं जो पाकिस्तान के अंदर आम पाकिस्तानी कर चुका है मैंने तो नहीं कहा था लोगों को कि कुंडे लगा के ना बिजली चोरी करें आज वो बिजली को रोकते हैं वो जो इतनी चोरी की ठीक है आम बंदे ने कुंडे लगा के आज उसको हक नहीं है कुंडे लगा के रोने वाले को कि बिजली नहीं आती तुमने पैसे नहीं दिए तुमने कुंडे लगाए तुमने गवर्नमेंट से चोरी की जितनी तुम कर सकते थे तुमने रिसोर्सेज सबके चोरी किए आज तुम पछता रहे हो भीख मंगा शाह आप जी जो इबरत के आप कह साथ रहे हैं उससे टोटल एग्री कर रहा हूं, जो आप हाँ तो उठा फिर रहे हो ना पॉइंट, गाइस बट मैं बट कुछ बट बोलूं आगे प्लीज आगे आगे बात सुने शाह जी, आप चवन्नी की चोरी पकड़ रहे हो, आप करोड़ों की चोरी को निग्लेक्ट कर रहे हो, यार मैं दैट्स द आपको मैं प्रॉब्लम विद द निगलेक्ट यार नहीं मैं कर कुछ रहा आर्गुमेंट. बात मैं करूं आपको यहाँ पे दिखाने की ओके मडूसा को हेड मोहम्मद स्पीक यार बात ऐसी है कि बलोच भी होती है मंजूर पश्तीन भी होती है ठीक है सब होती हैं फिर तो सभी होती हैं बिकॉज अपेरेंटली राइट नाउ मैं कहती हूँ 70% पाकिस्तान इज अगेंस्ट एस्टैब्लिशमेंट ठीक है इवन फौज में भी जो ये स्पेसिफिक एक वो है क्या कहते हैं उसे एथनिसिटी पंजाबी जो है वो सारे मतलब देयर सपोर्ट व्हाट मोस्ट ऑफ दीस पीपल आर डूइंग ठीक है सो अगर कोई ये हमें कह रहा है कि मुल्क पीछे इस वजह से रह गया बिकॉज किसी ने कुंडा लगा लिया ठीक है किसी ने इधर उधर किसी वो ने ठीक है आई अंडरस्टैंड कि हमारे लोग भी कोई ऐसे इंसान के बच्चे नहीं है आई अंडरस्टैंड दैट बट द रोल मार्शल लॉस प्लेड ठीक है सिंस 1950s ठीक है इन डिस्ट्रॉइंग दिस कंट्री ठीक है and the role that matlab you just said that they're trying to defend Pakistan they only want Pakistan to do better which Pakistan the state within the state or the complete Pakistan because it doesn't look that way I mean lag nahi raha ठीक है बिल्कुल भी ऐसा लग नहीं रहा यहाँ बलोच निकले हुए हैं सिंधियों को अलग स्टेट चाहिए मंजूर पश्तीन लोग निकले हुए हैं रह कौन गया पंजाबी मंजूर पश्तीन की रीसेंट पंजाब के अंदर स्टेटमेंट्स जो भी कितनी ज्यादा आवाम इस वक्त इमरान खान के साथ लगी हुई है पश्तीन को बलोच मिलना जाए
नहीं, एक सेकंड, मंजूर पश्तीन ने पाकिस्तान आर्मी के बारे में क्या स्टेटमेंट दी 3 दिन पहले? मैंने नहीं देखी। बट लाइक मैं जो एक पॉइंट शाह जी, देखें, एक पता है पॉइंट क्या, रेस करूंगा जो ये कि एक ये ना, देखें, जी जी पहली चीज ये है कि देखें, जब मैं कुंडा लगाने की बात करता हूँ, कुंडा जो बचपन में लगा रहा है वो कल आर्मी चीफ बनेगा, वही आपका प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ठीक बचपन है, में कौन वही कुंडे बंदा लगाता है? जो लोया चोरी करता था, वो वो नवाज शरीफ बना, है ना? वही बंदा जो फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स के साथ सोशलिज्म लेके, कंट्रोल लेके आने की कोशिश किया, वही जुल्फकार अली भुट्टो बना। ठीक है, वही वही बंदा जो जुआ खेलता था क्रिकेट के टाइम के ऊपर, ठीक है, वही बंदा आके जुआ खेल के गया एज अ लीडर, इमरान खान। वही जियाउल हक जो ये तो कोई अजीब सी जाके बात है। दूसरों के, इसका ये मतलब है ये कि यूएस सारे में करप्ट, पाकिस्तान, ये यूरोप सब में, पाकिस्तान में है। आपका फ्यूचर यूके भी और यूएस में क्या जब तक करप्ट हम होगा, सेनेटर्स नहीं है? नहीं आके वो सेनेटर्स भी हैं, वो दूसरे लोग भी हैं। अब मजेदार बात क्या डोनाल्ड है, ट्रम्प जैसा बंदा प्रेसिडेंट बना है यूएस का। आर यू गोइंग टू से द होल यूएस इज लाइक डोनाल्ड ट्रम्प? Do I बोरिस even need to जैसा बंदा introduce that guy to यूके का you? बना है। Donald Trump, Donald Trump would Exactly. not be Donald Trump would not be in power if, for example, his shared values were not supported by a numerous or at least a significant proportion of Americans. Otherwise, he would not have those people in his rallies. So again, yes, दैट्स Donald व्हाट वी Trump की वांट तरह शाह जी, के दैट्स व्हाट वी डोनाल्ड वांट। ट्रंप की आर्म तरह के फोर्सेस मिलियंस बैरक पे ऑफ लोग बैठे, हैं और यूनाइटेड जो स्टेट्स अवाम के। चाह रही है, जो Guys, this अवाम is चाह not a रही है, Pakistan. उसे आने दे। यार पता है क्या, ये पाकिस्तान के बारे में इवेंट नहीं है। आप लोगों को अगर ग्लोबल पर्सपेक्टिव के अंदर लगता है कि पाकिस्तान बिल्कुल सेफ है एंड यू वांट टू गेट रिड ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, किसी को पॉलिटिकल, मैं तो नहीं उस पे बहस कर We सकता, don't want to. लेकिन India, we don't लेकिन want to बात get rid ये of है, establishment. बॉर्डर देखो पे रहे, बात बात ये है, बॉर्डर पे बात रहे, ये है कि चौकीदारी करे, पॉलिटिक्स में ना आए, पॉलिसी में ना आए। दैट्स व्हाट कायदे आजम सेड एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। That is यार what the कायदे job. आजम भी तकलीफ से मर गया था, आप अल्लाह करे जिंदा रहें। नहीं, लाइक व्हाट ही आपकी सेड दफा एम्बुलेंस उसकी आ गई विद थी। एम्बुलेंस में भी वन आई थिंक ईयर, किसी ने, वन ईयर, वन ईयर जब वो रहा है, he picked this thing up, he was a very intelligent Yeah, person। I ठीक actually है, think Jim Muhammad Ali Jinnah was the first stooge of the British, जिसने ये कंट्री को ही बनाया ही इस वजह से था कि ये that is what the papers show, that is what the archives of the parliament show. I'm really sorry, it might offend a lot of people, ठीक है, लेकिन I do not rate मोहम्मद अली जिन्ना as somebody जो एक सेपरेट पाकिस्तान को, एक सॉवरन पाकिस्तान देखना चाहता था। वरना वरना उसका आर्मी का फर्स्ट चीफ चीफ ऑफ ग्रेसी ना स्टाफ जो होता। है वो पूरा ना हाँ होता। ठीक है, ग्रेसी ना होता, आई एग्री टू दैट नोशन, बट द सेम वे उसी तरह अयूब ना होता, उसी तरह मुशर्रफ ना होता, उसी तरह जिया ना होता, मैं उसी यही तरह तो आपको बाजवा ना कह होता, रहा उसी हूँ, तरह आप क्यानी ना होता। ये तो सारे देखें, पता क्या, द पॉइंट उन्हीं की ओवर हियर लेगेसी इज चला रहे आई हैं। हैव अ मैं क्वेश्चन आपका नाउ, पॉइंट मैंने एग्री बहुत भी कर लूं, क्वेश्चन पर ये आंसर कर सारे लिए। जो जनरल्स हैं, देखें ये देखें एक कहाँ के सेकंड, चल मैंने रहे हैं? मैंने ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन आंसर कर दिया। मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ। गाइस रिलैक्स करो। मैं रिलैक्स हूँ, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन रिलैक्स। नाउ? अब मैं क्वेश्चन एक आप पूछना चाहता हूँ और मुझे आप सारे बताएं प्लीज, इसका जवाब दें। अब आपकी बारी क्वेश्चन आंसर करने की। ठीक है शाह ठीक जी। है, मुझे ये बताएं कि करंट सिचुएशन के अंदर जो अफगानिस्तान के अंदर हो रहा है, जो दुनिया में हो रहा है, जो चाइना अपने मसल फ्लेक्स कर रहा है, ठीक है, जो जिस तरह रशिया अपने मसल फ्लेक्स कर रहा है, पाकिस्तान के जिस तरह यूएस जो है अपनी हेजमनी को बरकरार रखना चाहता है, जिस तरह यूके करने की कोशिश कर रहा है, आपको क्या लगता है कि nothing has changed, we're in a very safe space compared to like 2-3 years ago? Do you not think कि policies as well as establishment and whatnot is be fair? आप लोग जो ग्लोबल न्यूज़ अराउंड देख रहे हैं, जो इंडिया के अंदर सिचुएशन है वो भी आपके बॉर्डर के अराउंड है, ठीक है, जिस तरह के मालदीव से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, बड़ी छोटी सी कंट्री है, ठीक है, do you not think all countries establishments are the ones who are like under
scrutiny right now, and specifically पाकिस्तान की establishment tricky situation में नहीं है आपकी नज़र में? अगर नहीं है तो मुझे बताएं कैसे नहीं है? नहीं, I am एस्टैब्लिशमेंट actually interested in इट्स knowing that. इट्स वेरी सिंपल शिवाजी, ठीक है। आपका घर है, ठीक है, मैं बड़ी सिंपल एग्जांपल देके, आपको लग रहा है चोरियां बढ़ रही हैं, इर्द गिर्द के लोग जरा खराब हो रहे हैं, बहुत चोरियां हैं, बाकी हैं, फलाना है, टमकाना है। आप घर के मालिक हैं, आप घर के सरबराह हैं, आप घर चलाते हैं, आपकी पे से घर चलता है। आपका चौकीदार कहता है बड़े हालात खराब हो रहे हैं, आप घर से बाहर रहो, मैं घर के अंदर हूँ, घर की हिफाजत कर दूंगा, ठीक है। मैं कहता हूं बिल्कुल आर्मी का रोल है, एस्टैब्लिशमेंट का रोल है, वी नीड अ स्ट्रांग प्रेजेंस ऑफ द आर्मी, ठीक है। ऑटोनॉमी भी होनी चाहिए उनकी, क्योंकि वो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर एक्सपर्ट्स इन व्हाट दे आर डूइंग, ठीक है। बट वो घर से बाहर चौकीदारी करे, वो घर के अंदर आके ये ना बताएं कि घर का सरबराह कौन होगा, ठीक है। घर के या अंदर मेरा काम मेरा कौन करेगा, क्वेश्चन घर के अंदर खाना इंटरनेशनल क्या खाया देखें जाएगा, वो देखें उनका काम देखें नहीं है। उन्हें घर देखें के बाहर रह के अच्छा चौकीदारी मुझे करनी है, एक बहुत बात अच्छी बताएं चौकीदारी करे, बहुत अच्छी Yeah, चौकीदारी yeah, करे, सिक्योरिटी it, पॉलिसी it बनाए, might बट offend घर you, के but अंदर you के did not मामलात में listen to उनका my कोई अमल दखल question. नहीं होना चाहिए, Yeah, मेरा सिंपल ये पॉइंट है। I'm sorry, ये रही ना पानी। ठीक है, I'll answer. I'll answer हाँ, his question. ठीक है, ठीक है, मुझे यूथियापन नहीं सुनना यहाँ पे। इट इज नॉट यूथिया, I ये तो देखिए टर्म ही बाद मेरा में कॉइन क्वेश्चन हुई है। सुनिए जरा, यूथिया वाला प्रिज्म उतारें। इमरान खान बहुत जबरदस्त आदमी है, उसके साथ आप ईद की नमाज शाहजी, पढ़ने जाइएगा लाइक जब आपको मौका इट्स मिले। अगर ओल्ड, अगर खान साहब ओल्डर देन उससे ईद यूथिया। के लिए वजू करने के लिए सुबह के टाइम तैयार हो जाए, वरना नवाज शरीफ के साथ चले जाइएगा, उसको और कोई काम नहीं है। नहीं अच्छा शाहजी, खैर, हमारा नहीं, मेरा एक सेकंड, सिट सिट मेरे सिट। क्वेश्चन को मैं फिर से नून लीग समझे। का सपोर्टर हूँ, एक मैं सेकंड नून लीग अपने का इमोशन सपोर्टर को हूँ, मैं कूले वोट को रखें, इज्जत मेरे दे रहा हूँ, क्वेश्चन मैं को गौर यूथिया से नहीं हूँ। सुने। मैं वोट को इज्जत दे रहा हूँ, ठीक है। ये नैरेटिव यार वोट को इज्जत देने का वोट है। को मैं चढ़ाता हूँ किसी जगह के ऊपर पाकिस्तानी, लेकिन आप पहले Yeah, बात Shaji, करें। एक second, you guys, relax, please, relax, guys, please relax with the language, ठीक है। Secondly, My language is फुरकान भाई, ना मैं आपके साथ profound एग्री in करती हूँ, terms of how ना the मैं Pakistani शाजी के साथ people एग्री करती speak हूँ। and how एक what सेकंड, it शाजी deserves. शाजी एक सेकंड, रिलैक्स करें थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स करें ताकि थोड़ा सा वो, खैर एनीवे, माय पॉइंट इज कि देखिए, मैं ना फुरकान भाई के साथ एग्री करती हूँ ना शाजी के साथ। जो हमारे स्टेट ऑफ अफेयर्स है फुरकान भाई, I'll be honest, I don't trust my politician enough to run the show. Trust me, I just don't trust them. Okay, so I don't exactly have any problem generally with the establishment running the show. I mean, if I'm honest, I would say that the only problem I have is the difference between those that are part of the establishment and those that are not part of the establishment. The bloody civilian, right? अगर मतलब जिस तरह से मतलब ये जो बलोचों के साथ हो रहा है और ये बाकी भी कम्युनिटी सिंधियों के साथ और पश्तूनों के साथ सबको ऑन बोर्ड ले, ठीक है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की क्या जरूरत है? इस्लामिक कंटोनमेंट ऑफ पाकिस्तान बना दो, फॉर मतलब जस्ट टर्न द होल पाकिस्तान इनटू कंटोनमेंट एंड टेक एवरीवन ऑन बोर्ड। हर घर से एक एक बंदा लो, उसको फौजी बनाओ और सबको फौजी फैमिलीज बना दो, ठीक है। दैट्स ISPR को वोट दो। हाँ, आईएसपीआर को वोट दो। और यार मैं ये मेरा मजाक भी नहीं कर रही, मतलब नहीं था। जो कर रहा हूँ मैं I मजाक नहीं कर agree. रही। I agree with you 100%. यार पता है टेक क्या, कंट्रोल। ये इसी तरीके से ये जो अभी कॉन्वर्सेशन है ना, अभी जो हमारे इसमें एकदम से ये इंटरनल पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे चली गई है, ठीक है, इसी तरह साउथ अफ्रीका में हुआ होगा जिसके ऊपर ये है, ठीक है। दैट इज व्हाई दे मेड दैट इंटरनेशनल स्टेटमेंट। माय पॉइंट इज प्रूवन, ठीक है। अब वो इसी तरीके से एक इंटरनल रकस क्रिएट करेंगे जहां पे बैठे हुए एक एक भाई साहब होंगे जो मेरे इक्विवेलेंट होंगे, जो कहेंगे कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट के पास और कोई चॉइस नहीं है। एक भाई साहब बैठे होंगे फुरकान भाई की तरह के, जो कह रहे होंगे कि हमारे जो करंट गवर्नमेंट है उसने अपार्थाइड को रिमूव मलमा नहीं किया। सपोर्टर। और इसी तरीके से कोई होगा वो कहेगा कि ये सेट की तरह के फॉर एग्जांपल क्या है, समवन उम्मा, लाइक, ठीक है, जो इसी तरह कर रहे होंगे, but they will fail to realize, and what at least Pakistanis more than South Africans need to realize,
बिकॉज साउथ अफ्रीका के अंदर तो अगर मैलमा आ गया तो वैसे ही बहुत बड़ा रजीम चेंज है, दैट वुड बी फॉल ऑफ द साउथ और एंटायर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्ट। लेकिन पाकिस्तान इज इन अ वेरी डिफरेंट सिचुएशन। मेरा क्वेश्चन फिर से गौर से सुने, वेयर यू हैव चाइना एज अ इन्फ्लुएंसर and United States and its allies as influencers. You have Taliban government on one side. You have a very strong India emerging. You have Russia on the doorstep through the three TAN countries. Do you not believe that right now the Pakistani establishment is, including Pakistani politicians, bureaucracy, the entire Pakistani state is in a very tricky situation. With all the internal problems, do you not see that outside world is closing in Pakistan, into Pakistan? Shaji, अब वो किस तरीके से, मेरी पूरी बात खत्म होने दो, क्या क्या वो फाइट बैक कर सकते हैं? और अगर नहीं फाइट बैक कर सकते तो उसके क्या रेमिफिकेशंस होंगे? समटाइम्स जब जब फॉर एग्जांपल आपकी अफगान वॉर हो रही थी, उसके अंदर इट डजंट मैटर कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, दैट वुड हैव अफेक्टेड पाकिस्तान इन वन वे और अनदर, एंड इट हैज फॉर 40 इयर्स। ईरान के अंदर जब रेवोल्यूशन आई, उसका 40 साल से आप खुमियाजा भुगत रहे हैं। उनके ऊपर लगी ना सैंक्शंस, बट दे अफेक्टेड यू जस्ट एज मच, राइट? आपकी ट्रेड रुक गई, आपके अंदर ऑयल एक्सपेंसिव हो गया। इसी तरीके से व्हाट इज हैपनिंग ग्लोबली एंड इन योर रीजन has to be viewed as what is happening regionally. Whether you like your politicians, whether you like your establishment or not, whatever you think, but it is a tricky situation. If you don't think it's a tricky situation, please answer my question. How is it not? Okay, Shaji, it is a Kanta, tricky एक दफा मैं situation. करूंगा। Sit, एक last point. नंबर वन, पहले पिछली बात पे पहले आप मुझे ये समझा दें कि साउथ अफ्रीका में एस्टेब्लिशमेंट कौन है और पॉलिटिशियंस कौन है, ठीक है? वो आप समझा दीजिएगा ऑन अ लाइटर नोट। सेकेंडली, मैं ये कहूंगा कि यार वो बहुत लाइक one sentence की बात है। Africans are the establishment who control the resources and who control and run the entire show, and they own 92% of their entire economy. The black populace lives on 8% of their economic stability. Do you know? So it's एग्रीड एग्रीड obvious एग्रीड who are the एग्रीड establishment. अब समझ आ गई। अब लाइक आई एग्री टू दैट पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब आगे ये बात है शाहजी कि लाइक कब टाइम रहा है जब पाकिस्तान की जो रीजनल इश्यूज हैं वो ऐसे मसले में ना रहे हों। नॉर्थ का बॉर्डर हो जाए, लेफ्ट का, राइट का, साउथ का, ईस्ट का, वेस्ट का, जहां का उठा लो, मसले तो रहे हैं। नेबर्स भी हमें बड़े अजीब की तरह के मिले हैं। एक यार तरफ आप मुझे क्वेश्चन आपके ना करें, आप मुझे तालिबान बताएं, है, आप मुझे ठीक बताएं, है। यू मैं थिंक द मैं मैं सिचुएशन सिंपल इज मैं नो मैं सिंपल डिफरेंट मैं और सिंपल नॉट? मैं सिंपल अब मुझे सिंपल बात क्वेश्चन ना मैं पूछें, आप अपना सिंपल स्टेटमेंट बताएं प्लीज। शाहजी, मैं स्टेटमेंट ही दे रहा हूँ, ठीक है। हर जगह आपके हमेशा से मसले रहे हैं। जब जो चाह रहे हैं हम कि एस्टैब्लिशमेंट उधर ही रहे, वो अपना सारा रोल करती रहे, ये जो मसले हैं इनको टैकल करती रहे, जो उनका काम है। बट सेंटर में गवर्नमेंट एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से लाके बिठा दे जिसमें कोई भी मसला ना हो। वो जो उसका रोल है एस्टैब्लिशमेंट, वो कोई कम हो जाएगा? जो इनके जनरल साहब हैं, जो इनकी सारी आर्मी है, जो इनकी फोर्सेस हैं, जो इनके टैंक हैं, जो इनकी जितना आर्मामेंट है, वो तो उतना ही रहेगा। लास्ट इनका जो गवर्नमेंट क्यों उड़ी है? इनका जो इन लास्ट अफेयर्स के गवर्नमेंट क्यों अंदर उड़ी है? जो भी इन अफेयर्स के लास्ट अंदर इनका गवर्नमेंट जो क्यों उड़ी है? क्यों उड़ी है? इमरान खान की गवर्नमेंट क्यों उड़ी है? क्यों उड़ी है आप बताएं। नहीं, आप मुझे बताएं, इमरान खान, हु डिड इमरान खान गो अगेंस्ट? Imran US. Khan went against यूएस, the यूएस, यूएस, द एस्टैब्लिशमेंट, यस। you think Imran Khan would visit Russia because you're I think No, because Imran Khan, no, not because of that, because United okay. States ने जो साइफर पास किया, ठीक है, Hmm. उसके बारे में बहुत क्लियरली खान साहब ने खुद स्टेटमेंट, नॉट नथिंग टू डू विद रशिया।
नहीं तो राइट। खान साहब ने अ, खुद कहा कि रजीम चेंज सर्टेन एक्शंस की वजह से हो रही थी, एंड अगेन Pakistan had tilted too much towards the Chinese side, and it was not center stage. If you don't want to agree to that notion, don't नहीं, agree आई to that एग्री, notion. मैं तो आपसे The एग्री कर fact रहा of the हूँ। matter is, मैं तो fact of the matter is, in that same time period, इमरान खान जो है वो बहुत ज्यादा रशा और exquisitely was moving towards China। ठीक है, जो इस बात को डिनाई करता है उसको खाली स्टेटमेंट्स और पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस और इमरान खान की तरफ से जो हरकतें और स्टेटमेंट्स आ रही थी, which a lot of people were happy about, but that is not something which would have benefited Pakistan in terms of the statements which he made, because that would have meant embargoes। उन and embargoes से after regime change, did anything change in Pakistan? No, it didn't. Yes, it did. Instantly, No. yes, a lot of things changed Economy is in shambles, Shaji. in terms of FATF. देखें, in terms of relations with the US, a lot changed. For the first time since Nawaz Sharif time, they actually sent a live ambassador, which was absent throughout Imran Khan's tenure. They started to invest back in Pakistan. They removed Pakistan from the FATF list. FATF, तो Shaji, that happened earlier before the regime change. No, it did Yeah, not। yeah, मैं dates yeah. बता सकता हूँ आपको इन चीज़ों की। FATF did not happen at इमरान खान टाइम। FATF की ग्रे लिस्ट से आप इमरान खान के पोस्ट निकले, ठीक है। प्लीज अपने डेट्स को चेक करें। I think it was during Imran Khan time. नो इट वाजंट, प्लीज गो एंड चेक। क्या बात कर रहे हैं आप? खैर हाँ नहीं। But Shaji, overall economy didn't change or nothing हाँ, drastic changed. तो मेरा पॉइंट ही जेन्युइनली ये है यहाँ पे कि इस वक्त पाकिस्तान, देखें, अगर आपको फरकान भाई ये लगता है कि इंटरनली इकोनॉमिक्स जो है वो उसके बारे में इस वक्त है, मेरा क्वेश्चन देखें, जो रीजनल चीज़ें हो रही हैं उसके अंदर क्या एस्टैब्लिशमेंट इज अंडर प्रेशर और नॉट। अगर आपको नहीं लगता तो दैट इज योर ओपिनियन, इट्स फाइन। मुझे लगता है इट डजंट मीन कि मैं कह रहा हूँ कि वो पॉलिटिकली कंट्रोल कर लें या डिक्टेटरशिप करते हैं या ये सारा कुछ करते हैं। आई एम जस्ट सेइंग इट्स अ शादी वेरी टफ टाइम फॉर योर रीजन शादी एंड स्पेसिफिकली फॉर पाकिस्तान। इंटरनल प्रॉब्लम से हटके आपकी आउटसाइड प्रॉब्लम्स भी बहुत बड़ी हैं इस वक्त, छोटी नहीं है। शादी I'll take you up on that. I'll take you up on that. देखिए, कोई बंदा भी पैनल पे ये डिसएग्री नहीं कर रहा कि एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स हैं। एक एडिशन फुरकान भाई ने गलती से कर दी कि वो तो बड़े अरसे से हैं, तो उनको उस बात की थोड़ी सी माफी दे दें। क्या लेकिन चीज? इन कि आपने कह दिया था ना गलती से कि भी पाकिस्तान तो हमेशा से ही एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स में रहा है, तो उसकी रहा माफी है। मांग। नहीं, सेट सैंक्शंस यार 90s में भी फुरकान भाई, लगे हैं। पता है क्या, वो बात कंप्लीटली एक्सटर्नल इररेलेवेंट प्रॉब्लम्स तो है और रहे हम हैं। गलत तरफ को डिबेट को लेके जा रहे हैं। कैन वी प्लीज कम बैक टू द कॉन्वर्सेशन? दिस इज नॉट अबाउट पाकिस्तान इंटरनल इश्यूज, दिस इज अबाउट व्हाट इज हैपनिंग ग्लोबली। चाइना एंड यूएस का मसला कभी नहीं था इस लेवल के ऊपर जितना इस वक्त है। तो वी आर लुकिंग एट द करंट सिचुएशन। पूरी दुनिया के अंदर है यार, पूरी दुनिया के शादी अंदर बातें हो रही हैं इस चीज के बारे में। अगर आपको लगता राइट है कि डायरेक्शन। तो चले, मालदीव्स को तो नहीं था ना इससे पहले ये मसला, सोमालिया को नहीं था, साउथ अफ्रीका को नहीं था इससे पहले ये मसला, एट्रिया को नहीं था ये मसला, इथियोपिया को नहीं था ये मसला, अब उन सबको है। यूक्रेन को नहीं था ये मसला, अब उनको भी है। जर्मनी को शादी नहीं था, जिस कंट्री में आप रहते हैं उनको नहीं था ये मसला बहुत सालों से, लेकिन अब उनको भी है। तो शादी इस सारे सिनेरियो के अंदर सेल्फ सफिशिएंसी सबसे ज्यादा जरूरी है। सॉवरेन, ताकि आप अपने डिसीजंस अपने फेवर में कर सकें, वो ज्यादा जरूरी है। पाकिस्तान ने टाइम ऑफ और वॉर देयर एक इज बहुत नो बड़ी वे। पावर थी जिसने पाकिस्तान को कहा था कि शिप्स भेजे, सऊदी अरेबिया।
यार हमने देखो नहीं ना, करे। मैं कोई एस्टैब्लिशमेंट का बंदा हूँ, मैं बहुत क्लियरली यहाँ पे आज बता रहा हूँ ना, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। एक्चुअली आई एम जस्ट अ पर्सन ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन। ये आप लोगों का मसला है, जो आप लोगों ने करना है। मैंने जितना ओपिनियन देना था दे दिया एज एन आउटसाइडर। थैंक यू वेरी मच, मुझे माफ आपने कर साझी ओपिनियंस नहीं दिए, आई एम सॉरी। अच्छा You guys, have just let's stated move toward the कि ये कुछ हो रहा है. You have not given any opinion. अच्छा You guys, just let's move यार toward the मुझे और end. पता है क्या, मैं Sit, ऑनेस्टली relax, बताऊं कि guys. आप ये एंडलेस कॉन्वर्सेशन है। आई थिंक वी वेस्टेड इंटायर 45 मिनट्स, क्योंकि ना मैं आपको कन्विंस कर सकता हूँ ना आप मुझे कन्विंस कर सकते हो। लेकिन बात क्या है कि जो मेरा ओपिनियन था वो मैंने दे दिया। आई डोंट एक्सपेक्ट नोबडी टू एग्री विद मी, इट्स फाइन। आप अपना ओपिनियन दो। आपको अगर लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो ट्रिकी सिचुएशन में नहीं है तो बताओ नहीं है यार। मुझे लगता है है मेरा बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी माय फाइनल सेंटेंस ऑन दिस एंड आई एम गोइंग टू रैप इट अप from my end at least. ठीक है, in terms of Pakistani politics, I simply think that this is a very tricky situation for Pakistan. Pakistan's sovereignty can be under attack. It is extremely dangerous. I'm not talking about internal issues, right? Because Pakistan happens to be surrounded and under influence of global as well as regional powers. अब उसके अंदर अगर आपको लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो 2 नंबर है, तो वो 2 नंबर ही होगी। देन यू हैव नो चॉइस। आपका पॉलिटिशियन भी 2 नंबर है तो वो भी 2 नंबर ही होगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तो एक चीज आपको पॉइंट आउट की है, 2 नंबर, वेदर इट इज फाइटिंग फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्टेट और स्टेट विद इन अ स्टेट, इट इज इन अ ट्रिकी सिचुएशन वेयर उनको मसला उनके सर्वाइवल का है। और पाकिस्तानी लोगों को एज पाकिस्तान की कंट्री की सर्वाइवल का। That is my opinion. You don't. Nobody has to agree with me. This is what I think. If you think it is there is an alternative opinion, give that opinion. वो तो कोई दे नहीं रहा, मेरे से बहस करके क्या मिलेगा? शख्सी बहस कहाँ नहीं है. You're stating facts. We know that these are facts. What should be? I mean, I'm not the prime minister. I cannot say do this. I'm just a regular person as any other Pakistani. We can only give our thoughts in regards to what should happen. We can't do this. हमें इस चीज के ऊपर ओपिनियन दे सकते हैं. हाँ जी, वी आर इन अ ट्रिकी सिचुएशन. नो शिट, द होल वर्ल्ड इज इन अ ट्रिकी सिचुएशन. The prices are going up. Well, no shit, prices are going up. What do we do now? What should be done? We are discussing that. क्या You आप might be लोगों ने discussing that, but my point was very, very simple. I was just reading the situation. If you don't think the establishment is in a position of dismay, then I tell me. जिसको भी इस चीज के साथ फुरकान भाई सेड दैट आपको नहीं लगता वो ट्रिकी सिचुएशन, तो बताएं मुझे कैसे नहीं है। मैं तो ये जानना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है अफगानिस्तान में रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, इंडिया वीकर हो रहा है? क्या आपको लगता है कि चाइना और यूएस पाकिस्तान के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाल रहे? क्या आपको लगता है कि रशिया का कोई प्रेशर नहीं है? क्या आपको लगता है, ये सारी कितनी ज्यादा क्वेश्चंस हैं। अगर आपको नहीं, लगता है कि ये ऐसा चीजें नहीं है, तो है. नहीं, ये चीजें तो है, इनको कौन डिनाई कर रहा है? हाँ तो मेरी Nobody तो is बात यहीं तक denying थी। it. मेरा तो इससे ज्यादा कोई कमेंट नहीं था। हाँ, तो then let's take it further ना. We should नहीं, लेकिन we फुरकान भाई थिंक्स दैट फुरकान फुरकान नहीं नहीं भाई, आप इसके ऊपर मुझे जवाब दें। डू यू हैव एन नहीं नहीं अल्टरनेटिव ओपिनियन? यू मेरा आस्क मी मेरा अ लॉट मे- ऑफ मेरा क्वेश्चन। सिंपल 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 ओपिनियन है कि जो उनका मैंडेट है आर्म्ड फोर्सेस का करने का, वो उसी के अंदर रह के प्रैक्टिस करें व्हाट दे आर लाइक दे हैव टू डू. ठीक है, जो उनकी देखें जॉब देखें है, जो उनकी फुरकान जॉब भाई, मेरा यहाँ डिस्क्रिप्शन है, पे ठीक है. देखें इट्स उसके वेरी अंदर रह सिंपल. के ये कैसे ये आप मसले, प्लीज शाहजी एक्सप्लेन शाहजी शाहजी अब देखे ना, ये मसले, इससे मैंने पहले कहा, कोई डिनाई नहीं कर रहा, ये इश्यूज हैं, पहले भी रहे हैं, इसी तरह के इश्यूज रहे, इससे कम रहे हैं, इससे ज्यादा लास्ट रहे टाइम हैं. इस तरह का इशू दैट कब था? कैन बी
शादी, मुझे मुझे आप देखिए बार बार देखिए, करें, इस we तरह के we इश्यूज we रहे we हैं, ये we बहुत लोग कह lost रहे हैं, मुझे half आपको of Pakistan, half of Pakistan ड्यू टू सर्टेन रीजंस, ठीक है, यार उससे ज्यादा आप जरा ड्रास्टिक इशू क्वेश्चन नहीं पे लिया होगा। आई थिंक सॉवरेनिटी पे आपने बात की ना, क्वेश्चन मेरा मेन मेरा मेन क्वेश्चन पॉइंट जो है ना, सॉवरेनिटी आई एम का गोइंग है। टू राइट वी इट लॉस्ट ऑन। हाफ ऑफ पाकिस्तान, एक जनरल और एक पॉलिटिशियन की हठधर्मी की वजह से वी लॉस्ट हाफ ऑफ पाकिस्तान। सॉवरेनिटी की बात है, उससे मेजर इशू आज तक नहीं रहा, ठीक है। इसी तरह के आप इश्यूज की बात करें और इसी के सिंध इसके मैप में शो कर दिया, सॉवरेनिटी के इश्यूज आप हाईलाइट कर रहे हैं। मेरा कहने का मकसद है जो सोल्यूशन है वो आर्म्ड फोर्सेस की इंटरवेंशन के बगैर भी हो सकता है। दैट्स व्हाट माय ओपिनियन मैं इज। अपना दीज आर देखें वेरी अगेन। वेरी इंपॉर्टेंट एंड यार वेरी फुरकान वेरी भाई, क्रिटिकल इश्यूज, बट उनकी फुरकान भाई, जो with पॉलिटिक्स के all अंदर due इंटरवेंशन है respect, that is उसके not the बगैर भी हो question which सकता I asked. Listen to my है। question again before I write it on the ticket. When was the last time in Pakistan's entire history there was a global power shift which occurred? कोल्ड वॉर। I give you that. Now we're to getting somewhere, finally. ठीक है, was Pakistan able to avoid by without taking a side? Pakistan took the wrong side. Why did Pakistan take that side? Do you know what Russia had US? अच्छा, अब ये बहुत लोगों को नहीं पता. There is a revolution which occurred in Afghanistan, which is known as the Saur Revolution. Saur, please search it up when you have time. Saur Revolution was a communist revolution. When the communist revolution took place in Afghanistan, उन्होंने सोवियत यूनियन ने प्रॉमिस किया उन सोवियत सपोर्टर्स को, उन कम्युनिस्ट को, कि हम आपको नॉर्दर्न फ्रंटियर ड्यूरन लाइन के उस साइड के जितने एरियाज हैं वो पाकिस्तान से लेके देंगे बाय हुक और क्रुक. दैट इज व्हेन पाकिस्तान टुक द अदर साइड. Go and check the statements of the USSR president of that time. Go and check the statements of their negotiation with the Afghan leadership at the time. So again, Pakistan chose a side which came into its hands. Whether you want. I नहीं शाजी, I again agree with the notion कि सही साइड लेनी चाहिए जो कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में हो। नहीं, बट मेरा पॉइंट मेरा एग्जैक्टली मेरा ये है मेरा कि मे, at time of a situation like that, you do not have a choice. Afghanistan and USSR did not leave Pakistan with a choice. Do we have a choice USSR today? ने जिस दिन जाके अफगानियों को ये साउर रेवोल्यूशन में कह दिया था कि हम आपको ड्यूरन लाइन के दूसरी साइड वाले सारे के सारे एरियाज बाय हुक और क्रुक ऑक्यूपाई करके आपकी झोली में डालेंगे, हम अपनी फोर्सेस भेजेंगे आपके साथ वो करने के लिए, तो उस वक्त पाकिस्तान को साइड गिफ्ट के अंदर मिल गई थी कि उन्होंने किस साइड पे जाना है, और अभी भी यही होगा. This time the Pakistani establishment, what they're trying to do, देखिए मैच तो आपका हो रहा है, वेदर यू लाइक इट. क्रिकेट नोशन जो है उसके अंदर ही चले जाएं एक सेकंड के लिए, मैच तो आपका पड़ गया. अब आपके पास अगर अच्छे प्लेयर नहीं है, ना एस्टैब्लिशमेंट में ना पॉलिटिक्स में, तो फिर और टॉस भी आपने हार जाना है, तो फिर वेदर कंडीशंस भी आपकी सही नहीं है, वो एक अलहदा बात है ना. आपका कैप्टन भी अच्छा नहीं है, मैं मान गया. आपका बॉलर भी कोई नहीं है, बकवास है. आपका बैट्समैन भी बकवास, लेकिन मैच है आप. बट एंड द शाहजी कंडीशंस आर, मेरा कहने का मकसद ये है कि जो कैप्टन बनना है ना, मुझे उस पे मसला है, ठीक है। जो जो डायरेक्शन जो स्ट्रैटेजी आप बता रहे हैं उससे कोई मसला नहीं है। मैं कोई फुरकान भाई, स्ट्रेटजी नहीं बता रहा, कैप्टन मैं कौन तो आपको बनेगा ये टीम बता में, रहा मैं हूँ कि क्या क्रिकेट की हो टर्म्स में ही रहा मैं है. कहूंगा। शाहजी अब सुन तो लेना, अर्ज सुन लें आप। मैं ये कह रहा हूं जो कैप्टन बनना है ना, वो डिसीजन मेकिंग, अब क्रिकेट में कहाँ मसला आता है, कोच और कैप्टन के दरमियान आता है। फुटबॉल के अंदर देख ले, कोच और कैप्टन के दरमियान मसला आता है ना। व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी इन दी एंड, किससे डिसाइड करना है? अगर देर इज अ रिटन एसओपी
कि लाइक ये चीजें हैं जो कि कोच डिसाइड करेगा और ये चीजें हैं जो कि कैप्टन डिसाइड करेगा, वो उसी एसओपी को फॉलो करते हुए, विच आई वुड से इज द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको फॉलो करते हुए वो एक्सरसाइज करें देयर डिसीजन मेकिंग, व्हाट दे कैन डू, व्हाट दे कैन नॉट डू, कोई मसला नहीं है मुझे सिर्फ इस चीज से। बाकी जो स्ट्रेटजी है जो आप बात कर रहे हो, मैं टोटली एग्री करता हूँ। और उसके ऊपर मैं जरा ऐड इन करना चाहूंगा शाह जी, वी वर गिफ्टेड अ साइड इन द लास्ट मैच, लेट्स कॉल इट, वी हैव अ चॉइस राइट नाउ। जिस तरह आपने कहा वी आर गोइंग टू एंड अप विद अ साइड, द No, वर्ल्ड we're इज not. गोइंग टू बी polarized, So yes, what the we have a Pakistani choice, establish देखो we whether पता है क्या जो जितने लोग हैं ना, I don't know if Pakistani establishment is going to succeed in doing that or not, but from this the people as much as I have read, from as much as a few people I know, चलो ठीक है मैं नहीं ज्यादा लोगों को जानता हूँ, फाइन ठीक है, लेकिन जितनी आर्मी की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, जितनी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसीज इस वक्त बन रही हैं, जितनी आर्मी और इस्टेब्लिशमेंट चीज़ें कर रही है, उनका प्राइमरी गोल ये है कि वो किसी तरीके से चाइना और रशिया स्ट्रोक यूएसए और यूरोप के सेंटर के अंदर रुकें और किसी तरह दोनों के साथ वो इनफ उनका इंटरेस्ट यहाँ पे रखें कि nobody goes against them directly, and that is the ideal situation. End के ऊपर अगर they can't keep that access, it will fiddle out anyways. और उसके लिए वो बार बार पॉलिटिकल पार्टीज को चेंज करेंगे। अब नवाज शरीफ को लाने की कोशिश करेंगे तो उसके अंदर इंडिया के साथ रिलेशन थोड़े बेहतर करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा थ्रेट वहां से कम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, शाह जी, दूसरी all साइड of से this, कोशिश करेंगे। इफ all दैट of वोंट this वर्क आउट दे विल रिमूव हिम एज वेल, मे बी इट विल बी समवन एल्स, all of this बट is just making fun of the general populace again. यार पता है क्या, I will agree आई एम that रियली Mahan, सॉरी, लेकिन आपकी हर कंट्री के अंदर ना, हर कंट्री में कुछ लॉबी ग्रुप्स दूसरी लॉबी ग्रुप्स और कई जो इदारे होते हैं वो दूसरे इदारों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। कहीं पे वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, कहीं पे वो कोऑपरेट्स की शक्ल में आता है, कहीं पे वो आर्मीज की शक्ल में आता है। so बहुत सारी then make it exact ना, जिस तरह मैं और हम बार बार कह रहे हैं, do it directly. can't do it ISP that the world get a won't blood buy it, it's not for you. responsibility for Pakistani your public actions. already knows. देखो बात क्या है कि सेड अभी भी तुम अगर आर्मी के पास कॉन्ट्रैक्ट लेके जाते हो ना, ठीक है, या उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट आया है, तो मोस्ट लाइकली you'll get it if you have merit, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं फॉर एग्जांपल किसी पाकिस्तानी अथॉरिटी के पास जाता हूँ ना, आई वोंट बी एक्सेप्टेड ऑन मेरिट, आई वुड नीड अ सिफारिश, ठीक है। सेकेंडली पाकिस्तान आर्मी के अंदर कहीं और से तो लोग आते नहीं, है ना। पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर फिर रोक रुकावट आया है कि कौन बंदा किस लेवल पे रिप्रेजेंटेशन करेगा। पाकिस्तान आर्मी से तो नीचे से ऊपर तक लोग आ सकते हैं। यही मैंने सुना है, यही मैंने देखा है। इसी तरह मैंने बहुत सारे लोगों को सक्सेसफुल होते हुए भी देखा है, ठीक है। तो पाकिस्तानी आर्मी के अंदर या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर या पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी के अंदर, विच इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तानी लोग ही हैं यार, बल्कि ज़्यादा आम लोग हैं कंपेयर टू I'm द saying पॉलिटिशियंस और all द that I'm बिजनेसमैन। saying, all of that ज़्यादा is आम take the लोग हैं। आप responsibility बैकग्राउंड ना। देखोगे तो बहुत सारे उनके जनरल्स और कर्नल्स और ब्रिगेडियर्स लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। शाह जी, what exactly am I saying? क्या कह रहे हो सर? What am I saying? I'm saying यार since अगर तुम्हें this खुद ही is नहीं the पता तो आई structure, कांट हेल्प यू, आई वेस्टेड माय टाइम स्पीकिंग। पहले पता तो करो कि तुम कहना क्या you're चाहते saying हो, the क्या things, कर। you're saying the things that I agree with, and देखिए, you're telling me the things that I'm agreeing with, and then you're saying कि अगर तुम्हें इसका नहीं पता, मुझे पता है, I अगर know पता these है things. ये क्यों मार रहे हो मुझे? अगर पता है तो उसके बाद फिर बंदा ये कहता है कि since you are controlling it anyways, take the bloody responsibility as well.
take the यार blame ये as मेरे well. ख्याल से ना बहुत बच्चों वाली बात है. दिस इज नॉट हाउ इंटरनेशनल शाह जी, स्ट्रक्चर वर्क. अगर पाकिस्तानी अथॉरिटीज अभी ये कह देंगी तो कैरी लूगर बिल का क्या करोगे, जो और जिसके वो सिग्नेटरीज हैं, आप एफएटीएफ के अंदर उसके लॉस के अंदर आ जाओगे. देयर इज अ रीजन व्हाई दीस सिस्टम्स आर देयर. इट इज फॉर द इंटरनेशनल लॉबीज. इट हैज नथिंग टू डू विद अ नॉर्मल पर्सन. ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल चाइनीज को ही आप देख लो, चाइनीज की सिंगल स्टेट गवर्नेंस है. China has been pressurizing Pakistan to change its political structure and turn it into a presidential system. Imran Khan even spoke about that, and at that time, a lot of other people did. But the fact of the matter is, वो presidential system के ऊपर क्यों पाकिस्तान को बार-बार enforce कर रहे थे, और पाकिस्तान में क्यों presidential system के ऊपर बात भी हुई थी? It was under the influence of China. They were saying follow suit. That's what they were talking about. the last ठीक time, है. Shah ji, we had a presidential system that was in Musharraf's time, not in essence the structure, but जो power hierarchy थी, and it was under American influence that happened. No, I'm talking about the presidential system which was being talked about It was recently. I'm just not. being talked about. I'm talking about what was there in Musharraf's time, तो जो इस सारा ये judges के through ये लेके ये आए थे. पॉइंट आने का आपका क्या मकसद है? मेरा कहने का मकसद ये है कि ये अमेरिकन इन्फ्लुएंस में ही हमेशा ये आपके जनरल्स ये आके हम पावर में उस रहे हैं. इस चीज तो को लाइक इसके अंदर क्या रॉकेट साइंस. कभी भी चाइना के या रशिया के इन्फ्लुएंस में कोई भी हमारा पॉलिटिशियंस आके पावर पे नहीं आया. हमारा जो भी इन्फ्लुएंस रहा है दैट हैज ऑलवेज बीन from the American end and the generals coming into power, whether it was दैट Ayub, whether it was Yahya, whether it was Zia, चाइना तो whether स्ट्रॉन्ग it अभी was हुआ है, तो Musharraf, and चाइना now the current generals. That एक goes सेकेंड. on. चाइना चाइना तो स्ट्रॉन्ग ही अभी हुआ है. यूएसएसआर ने तो आपको चांस ही नहीं दिया. मैंने दोनों का यूएसएसआर नाम लिया है. मैंने रशिया का नाम लिया नहीं, है और मैं उसके बाद यही चाइना आपको का कहने लिया लगा है. हूँ. यूएसएसआर तो भुट्टो एक टाइम पे यूएसएसआर की साइड कर रहा था ना. एंड व्हाट हैपेंड एज अ रिजल्टेंट, यूएसएसआर ने पहले इंडिया को सपोर्ट किया. फिर इंडिया को सपोर्ट करने के बाद अफगानिस्तान के अंदर साउथ रेवोल्यूशन के अंदर जाके जो उनका किंग जाहिर था, उसके उसके साथ इन्होंने निगोशिएट किया कि हम ड्यूरन लाइन के दूसरी साइड पे आएंगे. दैट्स नॉट वेरी फ्रेंडली ऑफ यूएसएसआर. ऑब्वियसली उसके ऑपोजिट ही कोई उन्हें सपोर्ट करेगा, जो आपकी टेरिटरी लेने की यूएसएसआर बात कर रहा है. एक थर्ड कंट्री को आपकी टेरिटरी प्लेट में पकड़ाने की बात कर रहा है. ठीक है, और डायरेक्ट स्टेटमेंट दे रहा है. उसके बाद व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? अभी चाइना इस तरह की स्टेटमेंट दे दे तो ऑब्वियसली यूएस जो भी कह रहा होगा पाकिस्तान उसी की साइड पे जाएगा. या अभी यूएसए इस तरह की स्टेटमेंट दे दे तो पाकिस्तान ओवरनाइट चाइना के फॉल लैप में फॉल कर जाएगा. अगर यूएस अभी स्टेटमेंट दे दे कि हम इंडिया को सपोर्ट करते हैं कि वो जाके लाहौर के ऊपर, केपीके के ऊपर, पेशावर में, इस्लामाबाद में, कराची में जाके ये सारे एरियाज जो हैं हम इंडिया के अखंड भारत को सपोर्ट करते हैं, अगले दिन पाकिस्तान जो है विल मूव टू चाइनाज लैप, फॉल इन चाइनाज लैप. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड एट द टाइम ऑफ यूएसएसआर. व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? इतनी हार्श स्टेटमेंट अगर दूसरी साइड से आएगी, जो आपका एलाय भी रहा है, दूसरी चीज भी है, व्हाट विल हैपन? ये इस तरह नहीं होता. मेरा इतनी चीजें आपको जो बात करने का यहाँ पे पिछले 45-50 मिनट से हम डिविएट हो चुके हैं. उसका मतलब मकसद क्या है कि ऐसे नहीं होता कि आर्मी ये कह दे या आर्मी इसको सिलेक्ट कर ले या वो कहे कि हम इसी तरीके से करें. देयर आर सर्टेन नेगोशिएशंस जो आपने साइन इन की हुई हैं. देयर आर सर्टेन कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट्स जो आपने ग्लोबली बनाए हुए हैं, सॉवरेन डील्स बनाई हुई हैं. आपका एक रीजनल इमेज है, आपका दूसरी चीजें हैं. आप इस तरह तो नहीं बस स्टेटमेंट दे सकते कि ये सारा कुछ बस ऐसे ही है और हम रातों रात चेंज कर देंगे और वैसे हो जाएगा और इंटरनेशनल कम्युनिटी एक्सेप्ट कर लेगी और उसका आपको इफेक्ट नहीं होगा. अभी जो चाइना और जो साइनोसफियर और एंग्लोसफियर के बीच के अंदर पाकिस्तान हैपन्स टू बी वन ऑफ दोज वेरी फ्यू कंट्रीज जिनके साथ दोनों चाइना और यूएस इस वक्त बातचीत कर रहे हैं टेबल के ऊपर. ठीक है. ठीक है. शाह जी एक That एक is एक even एक not no longer the case for India. India has chosen a camp ठीक है. and that is the ठीक है. Russian camp. शाह जी कैंप्स और ये सारी चीजें समझ आ गई हैं. उस पे ज्यादा हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है. ठीक है. बट एक क्वेश्चन मेरा आपसे होगा.
और वो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अब हाइपोथेटिकली ले लें, पाकिस्तानी जो पॉपुलस है वो एक चाह रहा है कि एक शख्स या एक पार्टी कोई भी हो, नून लीग, चलो नवाज को वो चाह रहा है, ठीक है, 2018 में वो नवाज को चाह रहा था कि वो पावर में आए, या अभी किसी और को चाह रहा है वो पावर में आए, और इन सारे रीजंस की वजह से उन्हें डर है कि यार ये कोई ऐसा डिसीजन ना ले लें जो कि हमारे जो इंटरनेशनल पावर हाउसेस हैं उनको नाराज ना कर, ठीक है। तो जो एक आपकी मेजॉरिटी चाह रही है वो इम्पोर्टेंट है, या आपका एक कंस्ट्रक्टेड स्क्रिप्टेड चीज इम्पोर्टेंट है कि किसको लाना है, क्या करना है, क्या डिसीजंस लेने हैं, वो इम्पोर्टेंट है। जो आपकी मेजॉरिटी लिविंग इन पाकिस्तान, व्हाट दे वांट, इज दैट इम्पोर्टेंट, और ऑल दीज थिंग्स? और ये सिर्फ I think लाइक everything आप else इसमें इस देखें देखें मेरी बात सुने। इस वक्त जो majority यूनाइटेड किंगडम के अंदर थी, they were in support of Jeremy Corbyn, but the state was not. The state was not because they wanted to leave the EU with a hard Brexit, because remaining within the EU would mean I'm not deviating. I'm just using it as an example. और जो आपकी majority public थी, especially Scotland जो था, उसको भी intact रखने के लिए, जहाँ पे 72% were in favor of remaining part of the EU. पहले उनकी independence के अंदर EU से statement दिलवा के, but what was the main reason why United Kingdom's establishment actually supported Nigel Farage to an extent, और बाद में उस वो फ्रांस की नेशनैलिटी लेके भी बैठा हुआ है, ड्यूल नेशनैलिटी बाय द वे, ठीक है। क्यों क्यों उन्होंने उसको सपोर्ट किया? बिकॉज रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयू वुड मीन the United Kingdom would have limited access to Anglosphere and would not be able to go to direct wars or create those next negotiations which United States requires it to do, especially with the international borders जो कि यूनाइटेड किंगडम के अभी भी पूरी दुनिया के अंदर आइलैंड्स की शक्ल के अंदर है, इन वेरी स्ट्रेटेजिक पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो what did they do? The public wanted to be with the EU, but they chose not to be with the EU. Do you think they did not realize there was going to be wars in Europe and what is happening in Europe right now? ठीक है, अगर हम जर्मनी के साथ यूके की इकोनॉमी को इस वक्त कंपेयर करें तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन यूनाइटेड किंगडम के प्रोस्पेक्ट्स मुझे ज़्यादा हायर लग रहे हैं, अनलेस के जर्मनी जो है वो जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन को इश्यूज आने शुरू हो गए हैं, जिस तरह जर्मनी अपनी यूटिलिटीज को कंट्रोल नहीं कर सका, बाकी यूरोप ने चीखो पुकार करनी शुरू कर दी, यूनाइटेड किंगडम इज काइंड ऑफ एस्टिमेटेड दैट, और एटलीस्ट द एस्टैब्लिशमेंट डिड, and they got their people out of it because moving towards a certain thing. Will it work out for them or not? Time will tell. Lekin they cut off from continental Europe's economic and direct war. That's what they did because they knew कि रशिया ने ये करना है. अच्छा शाजी आप समझ रहे हैं? उसी तरीके से मैं आपका वही क्वेश्चन तो आंसर करने देना. With the prerequisite which I have painted, the majority of the British populace wanted to remain part of the EU. They wanted to go on to holidays and everything. And today the majority think, including myself, who used to think कि बहुत गलत किया EU से निकल के. I think it was a very right move. When I look at the current global situation, it was a brilliant move at a brilliant time by the establishment. Did the people conceive it? No. ठीक है. अब मेरा क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स अनआंसर्ड, और आई वुडंट यूज योर हार्श वर्ड्स, बट मैं ये पूछूंगा कि लाइक उन्होंने किया क्या, जो डिसीजन लिया जिसपे आप कह रहे हो कि उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट ने सपोर्ट किया, उन्होंने किया क्या? व्हाट दे एक्चुअली
Shaji, सुन ले. Did they नहीं, मुझे interfere समझ in में the आई establishment को किसने political support. process? Did they interfere in the political process in any way or form? Of course they did. How? Of course they did. They How? lied to the public in terms of how much they give to the EU. They lied to them in terms of officially lied to The them. politicians. Yes. No, no. Mm-hmm. The chairman of NHS, various lobby groups, Mm-hmm. then the bankers, the State Bank of England का जो Mm-hmm. chairman था, all part of authorities, जो पाकिस्तान के अंदर defense forces के लोग थे, वो लोग, all these people, जो veterans थे, उनकी जो society है, उनका जो सारा जितनी आपकी public की authorities थी, वो नाइजल फराज को सपोर्ट कर रही थी. They were supporting Britishness, while the politicians were going the other way around. Apart from नाइजल फराज, आपकी जो 3 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो तो यूरोप के अंदर रिमेन की कैंपेन कर रही थी. आपके प्राइम मिनिस्टर्स, एक्स प्राइम मिनिस्टर्स, from John Major to Tony Blair to Gordon Brown to Cameron, they were all in to Shaji, remain in Europe. if I can phrase it in a very like a summarize करूं, तो उसमें like abstract अगर इसका मैं बताऊं तो like counter narrative produce किया उन्होंने. ठीक है, that's all they did. What I understood, they didn't took any draconian measures of destroying a party, putting them in jails, journalists के मुंह बंद करना, इस तरह के draconian measures कोई नहीं लिए. They put up a counter narrative through certain lobby groups. Jeremy That's what I understood. Again, Jeremy Corbyn, who was going to a very different direction, he was completely demonized by the state. Demonized is then again a counter narrative ना. Metropolitan Police के उस वक्त के पता है क्या statements हैं? जरा चेक करें. ठीक है कि he is a threat to national security. And who was giving these statements? The Metropolitan Police के जो commissioners हैं. ठीक है. Establishment तो उसके साथ ही थी. क्वीन की आपको पता है जो क्वीन की प्रिवी काउंसिल है जिसका पार्ट ऑपोजिशन को ना पड़ता है. Do you know what their statement was? This man is a problem. He is a threat to national security. जब आपको इतने हाई लेवल से एक बंदे के अगेंस्ट डीमनाइजेशन, एक चीजों के अगेंस्ट डीमनाइजेशन मिलेगी. एंड इवन टुडे इफ यू स्पीक टू पीपल हु आर अंडर द एज ऑफ 40, they are in love with Jeremy Corbyn. Majority of young people in United Kingdom uphold him as their leader. इसी वजह से अभी भी जो स्ट्रीट मार्चेस और पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशंस होती हैं, he is not even leading any public place. He has rallies of thousands of people. So this Shaji, is what happens when the state decides that they want to go against a politician, even in a country like United Kingdom. That is my point. What they do is a sideline that person. It's what, pardon? Acha, Furqan bhai, we have last 8 minutes, so please give your last statements. And just one last thing like I want to like discuss. I don't think कि आज जो है ending statement की जरूरत भी है. वैसे बस आप लोग खत्म कर लो तो फिर हाँ ठीक. I think I agree. So like Shaji, but they didn't took any measures जो के उनके कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर हो, जो कि लॉ से बाहर हो, जो कि ड्रैकोनियन हो. So I think these are fair measures. It's fine who you support, who the establishment supports. There are certain statements made and that is it. ठीक है. They're not put behind bars. They उनके ऊपर कोई इस तरह का पार्टी तोड़ने का, बनाने का like अमल दखल नहीं हुआ. So these are fair measures. मेरा question still remains unanswered कि अगर गवर्नमेंट पे कोई लाना चाह रहा है अवाम थ्रू वोट, थ्रू द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, उसके अंदर हिंड्रेंस लाना वो सही है या गलत है? क्योंकि बाकी जो स्ट्रैटेजी है उससे मैं एग्री करता हूँ आपसे,
उसमें Yeah, कोई correct. दो Yeah, राय Furkan नहीं bhai, है. this is a very long debate now, and again, लोगों की party whips चली गई. ठीक है. Do you know, currently speaking, Jeremy Corbyn is no longer a Labour Party member because he was thrown out. There were so many cases against him. The state as well has his own political party, completely sideline the guy in any way possible. ठीक है. और दूसरी साइड के ऊपर नाइजल फराज जो अब कहता है कि ब्रेक्सिट को निकलना हो तो मैंने तो ऐसे ही फ्लूक मार दिया था एंड आई कंसीडर्ड, वो दूसरी तरफ को चला गया. द पॉइंट बीइंग, द स्टेट और एनीवन एल्स, आप डेमोक्रेसी पे बड़ा बिलीव करते होंगे, मैं नहीं बिलीवर डेमोक्रेसी का. देयर आई हैव सेड इट. आई डोंट केयर कि एक अकबर या एक यूसुफ जो मैट्रिक भी नहीं पास कर सका उसकी क्या राय है. आई डोंट केयर. ठीक है. क्योंकि दैट पर्सन इज नॉट गोइंग टू कम एंड सेव एनीथिंग एट सम स्टेज. आई डोंट इवन थिंक कि एनी कंट्री हैज प्रोग्रेस्ड थ्रू डेमोक्रेसी. Democracy is something which can be afforded after a country has succeeded to a certain extent. ना चाइना डेमोक्रेट था ना उस टाइम तक जितनी वो अप लेवरेज दे रहा है अपने लोगों को, इट कैन अफोर्ड टू डू इट. ठीक है. इट वाज अ डिक्टेटरशिप. सो वाज यूनाइटेड स्टेट्स. और जिस टाइम के ऊपर यूके भी बढ़ रहा था वहां पे भी अथॉरिटेरियन रूल ही था. नो कंट्री इन इट्स एंटायर हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड और नो एम्पायर हैज एवर बीन क्रिएटेड जहाँ पे डेमोक्रेटिक लोगों ने कहीं पे वोट किया हो और वो जाके उधर से किसी को भी वोट करते हैं और सारा कुछ हो जाए. एंड दोज पीपल हु लिव इन दैट इल्यूजन के डोनाल्ड ट्रंप या कोई भी बंदा, जिस तरह जॉन मेजर एक कंडक्टर था अपेरेंटली, ठीक है, वो एक दिन बैठे बैठे प्राइम मिनिस्टर्स या प्रेसिडेंट्स बन जाते हैं और वो कुछ कर सकते हैं. They're just mouthpieces. It's a PR job of a very high level. You're a mouthpiece of huge authorities. But do you actually believe कि यूनाइटेड स्टेट्स जैसी मिलिट्री एम्पायर को एक डोनाल्ड ट्रंप जैसा स्टूपिड सा आदमी जो बिजनेसमैन है, एक दिन पहले वो रियलिटी टीवी शो का बंदा था, बाद में उसको सारा कंट्रोल दे दिया उन्होंने, then your answer would be कि जितने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट थे, they did not let them go through. Interesting And discussion, this is Shaji. what happens. I think I enjoyed the discussion, and I would give the mic to Maham and Sid because they haven't spoken, and I think we have been unfair in going back and forth for quite some time. पहले जब टाइम था तब मौका दिया नहीं, अब कोई फायदा नहीं. लेकिन चलो, thank you for listening to us, whoever is listening even now, and subscribe to the channel, press the bell button to get regular update of our sessions. We will see you again with another new topic. See you. Have a nice day. Have a nice evening or afternoon, wherever you're watching. And thank you for listening, I guess. Goodbye.